चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका को पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र कम करने को लेकर चल रही बहस पर ध्यान देना चाहिए। नई दिल्ली में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट पर हुए कार्यक्रम में शनिवार को उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र वालों के बीच सेक्सुअल एक्ट को आपराधिक मानता है, ये देखे बिना कि नाबालिगों के बीच सहमति थी या नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक 18 से कम उम्र वालों के बीच सहमति नहीं होती है। सीजेआई ने कहा, जज रहते हुए मैंने देखा है, इस कैटेगरी के केस जजों के सामने बड़े सवाल खड़े करते हैं। इस मुद्दे को लेकर एक चिंता का माहौल बनता जा रहा है, जिस पर न्यायपालिका को ध्यान देने की जरूरत है। इसमें युवा हेल्थ केयर सेक्टर के एक्सपर्ट्स की तरफ से की गई भरोसेमंद रिसर्च को आधार बनाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज हमारे समाज की एक बड़ी और छिपी हुई समस्या है, क्योंकि इसके बारे में लोग चुप्पी साध लेते हैं। इसीलिए सरकारों और न्याय व्यवस्था का यह फर्ज बनता है कि परिवारों को ऐसे मामलों को रिपोर्ट करने का हौसला दे, चाहे आरोपी परिवार का कोई सदस्य क्यों न हो। उन्होंने कहा कि बच्चों को सेफ और अनसेफ टच के बीच फर्क बताना बेहद जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि परिवार की कथित इज्जत को बच्चे के हित से बढ़कर न समझा जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसे तरीके से काम करता है जिससे विक्टिम का ट्रॉमा कई गुना बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए न्यायपालिका और कार्यकारिणी को साथ मिलकर चलना होगा। 2022 marks the 10th anniversary of POCSO, making this an opportune moment for us to take stock of its implementation. When I heard of the theme for the annual stakeholders consultation, I cannot but be reminded of the incomparable words of Nelson Mandela on the occasion of the launch of the Nelson Mandela Children's Fund. He said, "There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children." If we are to introspect, there is much in our souls that needs attention. There is much truth to this statement. World over, children are the voiceless victims of physical, emotional, and sexual violence, and India is no exception to this phenomenon. The enactment of the POCSO Act in 2012 was a watershed moment in the history of child rights in India, because it finally provided a specialized mechanism for the adjudication of sexual crimes concerning children, while prioritizing the best interests of the child. It is gender-neutral legislation which provides for in-camera trials, support persons for the child, child-friendly cross-examination practices, and the protection of the identity of the child. The enactment of the POCSO Act, however, is only a first step in a long journey. The families of child victims are immensely hesitant to file a complaint with the police. And so we must be very careful about entrusting excessive powers to the police. The slow pace of the criminal justice system is undoubtedly one of the reasons for this, but other factors play a significant role as well. Issues concerning the sexual abuse of children continue to be plagued by immense stigma. There exists a culture of silence which stems from shame and conceptions of family honor, which we too so often confront in our courts. Two harmful stereotypes contribute to entrenching this culture of silence. The first is the stereotype that only the girl child can or is likely to be sexually abused. The second stereotype is that the perpetrator is a stranger. Research has consistently demonstrated both that boys are at equal risk for sexual abuse and that the perpetrator is known to the victim in an overwhelming number of cases and may be an immediate family member, caretaker, or neighbor. The sexual abuse of children, therefore, remains a hidden problem. If the parents of the child do not wish to report the issue, the child is left without a voice and can exercise little agency. But then there are children who have no parental support because they are pretty much left on the streets where they have no protectors. In that sense, the guardian of the child quite literally guards the rights of the child.
While the mandatory reporting requirement in the POCSO Act is aimed at addressing the issue of underreporting, it is essential to ensure that this does not prevent access to health care.